नमस्कार दोस्तों, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे। तो स्वागत है आपका दोबारा से मेरे इस चैनल स्टूडेंट्स की पाठशाला पर। आज हम लोग पार्ट 27 कवर करेंगे, द राउटलेज हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर इन इंग्लिश ब्रिटेन एंड आयरलैंड की। तो अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस प्लेलिस्ट को नहीं देखा है, जो कि एम एच अब्राहम्स के ऊपर बनी हुई है, एंड इसके भी कुछ पार्ट्स है जो अगर आप लोग मिस कर रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, आप लोग प्लीज जाकर चेकआउट कर लेना। So, without any delay, let's jump into it. So, our first question is, which phenomena is associated with the death of the novel? So, the correct answer is the intellectualization of literature. Okay, next. Who is an example of a writer who consciously distanced themselves from popular taste in the 1920s? So the correct answer is T.S. Eliot. Right. Next. Graham Greene made a distinction between his popular novels and his more serious book. What did he call his popular novel? So he called them shockers. Right. Next. Sorry. Which subgenre of novels has become a bestseller while retaining intellectual acceptability? So the right answer is academic novel. Okay, next. According to Mikhail Bakhtin, the novel is characterized by what? So a collage of different styles, voices, and points of view. Next. Which author created a fictional world that encompasses mythology, fable, fantasy, and reached a huge worldwide readership? So the correct answer is J.R.R. Tolkien. Right? Next. Next, our subtopic is later green. Okay. So the question is, which of the following novels by Graham Greene is considered one of the most serious work? So The Power and the Glory. This is most famous and the most important novel of Graham Greene. एंड आपको इसकी समरी पता होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको इसका पब्लिशिंग डेट भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो आप लोग एक बार देख लेना। What term did Graham Greene initially use to refer to his less serious novels? So the correct answer is entertainment. Okay. Next. Which Graham Greene novel was inspired by his work in the Ministry of Information during the Second World War? Right answer is the Ministry of Fear. Next. What is a recurring theme in Graham Greene novel, including his thrillers? So, guilt and salvation. Next. What genre did Graham Greene's shockers superficially belong to, despite their deeper themes? So, the correct answer is escape novels. Okay, next. Which novel by Graham Greene reflects the highest level of anxiety in Greenland? So, Dr. Fisher of Geneva or the Bomb Party. Next. What influenced Graham Greene's technique and the atmosphere in his novels? So, his time spent as cinema critique. Right? Next. In A World of My Own, a Dream Diary, what does Graham Greene explore? So, the relationship between dreams and anxiety. In this work, he explores the relationship between dream and anxiety. एंड आपको ये चीज माइंड में सेट कर लेनी है कि जो भी वर्क है उसका छोटा सा आपको थीम पता हो, क्योंकि दिस विल हेल्प यू टू एनालाइज द क्वेश्चन एंड एग्जाम में रटा हुआ तो काम आएगा ही, साथ ही साथ आपका जो इंस्टिंक्ट बोलेगा आपको उस पर भी फोकस करना है। ठीक है, कहीं पे भी अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि आपने इस वर्क की ये थीम देखी थी तो खुद आपको ऑटोमेटिक राइटर याद आने लगेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता चल जाता है कि ये राइटर इस थीम पे ही लिखता है। ठीक है,
सब राइटर्स की कुछ ना कुछ अलग अलग थीम होती है, राइट? ठीक है, नेक्स्ट, which novel by Graham Greene involves theme of violence, betrayal, and human weakness in the world of spies? So, The Confidential Agent. Okay, it involves a theme of violence, betrayal, human weakness, and the world of spies. Next. So, next our subtopic is post-war war. The question is, which novel introduced a more sustained note of seriousness into Evelyn Waugh's work? So, Bride's Head Revisited. ठीक है? Next. What is the central theme of Waugh trilogy Sword of Honor? So, the English experience of the Second World War. Next. In which year was the trilogy Sword of Honor published together? So the year is 1965 and you must remember it. Next, who is the hero of the Sword of Honor trilogy? So Guy Crouchback. Okay, ट्रायोलॉजी क्या होती है? बेसिकली इसमें आपको 3 बुक्स देखने को मिलेगी जो एक सीक्वेंस में फॉलो होती है, ठीक है? नेक्स्ट, व्हाट डज द हाउस ऑफ ब्राइडहेड रिप्रेजेंट इन ब्राइडहेड रिविजिटेड? सो द एरिस्टोक्रेसी, ठीक है? नेक्स्ट, which novel by Charles Morgan is mentioned as taking a slightly distant, ironic standpoint on the Second World War? The River Line. Next, what are the main themes explored in Charles Morgan, The River Line? So, intrigue, betrayal, and moral issues. In the conversation from The River Line, what analogy is used to describe the movement of Americans westward? So, the journey of Salmon upriver. Next. अब यहाँ से हमारे जॉर्ज ऑरवेल की बात आ गई है. So, what is the opening sentence of George Orwell's 1984? The correct answer is, it was bright cold day in April and the clocks were striking 13. So this is the opening line. Please mention कि opening and closing lines बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछी जाती है, चाहे वो आपका CUET हो या नेट हो या कोई सा भी एग्जाम हो. ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइन्स आर द इम्पोर्टेंट वन. तो जो भी आपको वर्क्स इम्पोर्टेंट लगे या जो भी वर्क्स मैं आपको बता रही हूँ कि बेटा ये इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों को उसका ओपनिंग लाइन्स एंड क्लोजिंग लाइन्स अच्छे से याद रखना है, ठीक है? एंड मैंने आप लोगों को ये किताब रिकमेंड भी की थी कि आप लोगों को पढ़ना चाहिए. इट्स अ साईफाई नॉवल. साईफाई नॉवल वो होती है जिसमें हम लोग साइंस फिक्शन का यूज करते हैं, राइट? नेक्स्ट, व्हाट इज द pseudonym ऑफ जॉर्ज ऑरवेल? So Eric Arthur Blair is the correct answer here. Okay, next. In 1984, what is the role of Big Brother? So a dictator who watches everyone. ठीक है, and he watches the thoughts of everyone too. ठीक है, वो सबके थॉट्स पे, हर इंसान की हरकतों पे नजरें रखे हुआ था बिग ब्रदर. जैसे बिग बॉस की आंख होती है ना, वैसे ही बिग बॉस इज वॉचिंग यू, ऐसा थीम है. एंड कहीं ना कहीं बिग बॉस की जो आंख का कॉन्सेप्ट है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ये यहीं से आया है. What is the special official language created by the state in 1984? So new speak. Next. Which character in 1984 is the protagonist who rebels against the state? So Winston Smith. इसने क्या किया था? एक लड़की से इसने प्यार कर लिया था जो कि इसके देश के कानून के खिलाफ था, ठीक है? फिर बाद में इसको बहुत टॉर्चर किया जाता है एंड वो अब उससे उस लड़की से प्यार करना छोड़ देता है, ठीक है? नेक्स्ट, व्हाट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेनरी ग्रीन्स राइटिंग style in his novel? So the correct answer is colloquial and ungrammatical. Next, which Henry Green novel is written
ऑलमोस्ट entirely in dialogue form. So nothing. ये आप लोग याद रखिएगा. Nothing is the one that is written in dialogue form. What does A.B. Crompton Burnett work often depict about family and society? So chilling and disturbing pictures. Next. Which novel by Green deal with a group of rich young people delayed at railway station by fog? So party going. Next. Which phrase does T.S. Eliot use to describe E.V. Compton Burnett depiction of society? The skull beneath the skin. Henry Green's novels are noted marking the transition between which type of novels? So upper and middle class concern and working class novel. Next. Which trilogy is written by Samuel Beckett? So Molly Malone dies the unnameable. Next. Which novel by L.P. Hartley begins with the line, "The past is another country, they do things differently there"? So the go between. Next. What influenced Christopher Isherwood writing post 1945? So Eastern thinking is the correct answer here. Next. Which author explored provincial life and working class frustration in their novels? So Alan Siriot. Next. Which protagonist of John Brain, The Room at the Top, is? So a small town provincial opportunist. Next. What term is used to describe Christopher Isherwood's semi-autobiographical writing? So this is autofiction. Next. What is the central character provision in Kingsley Amis' Lucky Jim? So university lecture. Which Kingsley Amis novel is study of old age? So ending up. Next. What theme is explored in Martin Amis' London Fields? So morality and murder in the television age. Next. What is the profession of character Keith Talent in London Fields? Darts player. Next. Martin Amis the novel Time's Arrow experiments with backward narration of time. Kingsley Amis novel The Folks That Live on the Hill is set in which area of London? Hampstead. Which novel by Martin Amis deals with the rivalry between two novelists? So the information. मुझे लगता है ये important है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा. Next. Which Kingsley Amis novel successfully imitates the classic early 20th century detective story? So the Riverside Villas Murder. What is the main character name Martin Amis novel Money? So John Self is the right answer here. Next. What does the term copter derive from? Helicopter. Next. In Thomas Dekker, The Gull's Horn book, what does the term cockatrice mean? So a war. What is the meaning of shoulder clapping in Dekker's The Gull's Horn book? Arrest. Shoulder clapping means arrest in Thomas Dekker book named The Gull's Horn book. Which novel by Anthony Burgess is noted for its depiction of urban slang? A Clock Orange. Which novel is considered a revision of the desert island myth originating from Robinson Crusoe? So the correct answer is Lord of the Flies. Okay, next. What kind of world does Golding depict in Lord of the Flies? So the correct answer is a dystopia. ठीक है? Which of Golding's novel examines the revolution of man in primeval times? So the correct answer is The Inheritors. Next. Which Golding novels begins a trilogy about an early sea journey to the antipodes? So Rites of the Passage is the correct answer here. Next. What notable award did Golding receive in 1983? So he received the Nobel Prize for Literature. बेटा नोबेल प्राइज और उसकी डेट्स बहुत पूछी जाती है, ठीक है.
एंड खास करके आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा कि 4 राइटर्स दिए हुए होंगे, ऊपर में क्वेश्चन होगा कि इनमें से किस राइटर को नोटेबल प्राइज नहीं मिला है, उसमें से आप लोग को टिक कराना होगा, ठीक है। नोटेबल प्राइज सॉरी नोबेल प्राइज किसको नहीं मिला है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है बेटा। तो आप लोग को तभी टिक करना होगा। अगर आप लोग को पता होगा कि विलियम गोल्डिंग को मिला है, इसको मिला है, इसको मिला है, तो वन जो होगा वो ऑड होगा, तो आपको उसको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, so which novel of Golding features a female narrator and an ancient Greek setting? So the double tongue. The double tongue is the correct answer here. So यहाँ पे आज जो हमारी वीडियो है ये खत्म होती है। नेक्स्ट कल हम लोग दूसरा पार्ट लाएंगे राउटलेज का। आई एम सॉरी वीडियो काफी लेट आई है, मैं बहुत ज्यादा बीमार थी एंड मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, बट आज मैंने बनाई है। सो कंटिन्यू देखिए, आई गेस कल तक मैं पूरा राउटलेज को बाइंड अप कर दूंगी, ठीक है। मुझे एक दिन और टाइम दीजिए, मैं कल एक लास्ट वीडियो आएगी जिसमें मैं सब कुछ कवर कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल की लास्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। एंड आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों का, ठीक है। चलिए फिर बाय।